अरे मैन आप लोग कैमरा ऑफ करो ना. Yeah, I guess everyone is here. Hi, my name is Martina. So I would basically like to second Abhinav on what he was saying. You know, it always starts with you. You are the key person who can change the world around, you know, because in my family, it is so that it's not only that the man is the head of the family. That starts with you and your family. You know, I have two lovely daughters and I would want to groom them to be a very self-independent individual, not to look down. And I think humanity is a very, very important and major factor here. You have to teach your daughter or your family, you know, to support each other and put your foot down wherever required. I think that's very, very important in terms of a family life. Because I've been a working mother. I have two lovely children. I was working till the end. I've seen society. So it's always, I would say that, you know, as a manager also, there are people who try to put you down. But it's all up to you how you take a stand against things that are going wrong against you. And it's always, bolte hain na, taali ek haath se nahi bajti. It's always two, that it's needed two to tango. So if you feel that you want the society to change, it has to start with you somewhere. Exactly. So that's it. Martina, you want to say something else? Oh, my voice is there or not? No, we can all hear you. No, I can hear you, but I would say, Abhinav, hats off to you. You know, it's very rare that a man is speaking his voice, which is his inner voice. I'm sure every man in our life has this somewhere at the back of his mind, that I want my woman to shine. I want her to reach heights. But like you said, it's not always that he's brought up that way. You know, his family somewhere says that, "Arey yaar, tumhari biwi तुमसे ज्यादा कमा रही है, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है." But if the man doesn't matter, I think if the world, in today's world, you see people are marrying with different age gaps. People are marrying with different designations. All doesn't matter. All it matters is how you feel about that individual. So it's all up here. I think if your mind, if your thought is that, you know, you look at everything in a positive way, then nothing negative will impact you. That's what I feel. Yeah, I agree to what you said. The only important thing is to understand that, see, what I experience with you is that you have a lot of josh in you towards energizing your kids and energizing. Uh, uh, there is something which is driving in you. It is not very peaceful. I see, I am not only a coach, I am a reader as well. I'm not a healer. I would not heal anybody with some kind of a modality or a science. I'm sure हो सकता है कि यहाँ पे कोई spiritual healers भी हो. I'm just telling you that, see, I am a coach. I understand people's situations. I read them intuitively, and I show them that what is the right option for them as well. Host साहिबा जरा देख लीजिए please. Yeah, Okay. So आपके लिए मुझे लगता है कि, see, you have been carrying a lot of जोश in you कि हाँ, this is what has been coming up a trend because of your experiences. The very important thing, अगर आप ध्यान से observe करो, when women in the society gets into extraordinary different role, as in lot of aggression, lot of self power, तो जो उनकी surroundings है ना, वो उसको एक अलग attitude के form में देखती हैं. ये कौन आ गई है, इतना जुनून क्यों दिखाई, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है. हालांकि वो एटीट्यूड होगा उसका सेल्फ रिस्पेक्ट का, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है. उन्होंने देखी सिर्फ वही औरत है जो कि चुपचाप बैठी रहती है, खड़े हो तो खड़े हो जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाए वो. लेकिन उन्हें ऐसी औरत देखी नहीं है. जब वो ऐसी औरत को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक क्यूरोसिटी आती है कि भाई इसमें ऐसा क्या है. इसके लिए तो और डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करी जाएं कि इसको तोड़ो, इसकी ईगो तोड़ो, ये कैसे इतना कर सकती है. ये जो डिफरेंस है ना कि वो कैसे कर सकती है, ये क्रिएट करता है ईगो. आई एम श्योर आप लोग जो मुस्कुरा रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं
क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों की मुस्कुराहट में मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बात आप लोगों को मैच कर रही है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप जो भी अपने बच्चों को सिखा रहे हो, लाइक मार्टिना, यू आर टीचिंग योर किड्स, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टीच देम इज आल्सो डिफेंस, फिजिकल बीइंग स्ट्रांग। औरत का मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्ट है, डेलिकेट है, वो छुई मुई है, उसे टच करो तो ये हो जाएगा। द वुमेन शुड बी सो स्ट्रांग दैट इफ एनी मैन कम्स अराउंड हर, if she is alone in a crowd as well, he should think thrice that should I go there or not. Few days back I made a voice clip and I shared with the people, और मैंने उसमें एक ही बात समझाई थी कि जब आपने मूवीज देखी होंगी या फिर एनिमल मूवीज आती हैं टीवी पे, जो आप देखते होंगे, तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक शेर शिकार करता है एक हिरण का। हिरण जैसी देख लेता है शेर को तो वो इतना डर जाता है कि उसकी आंखों में वो डर दिखाई देता है, और शेर अटैक करे बिना ही उसकी आंखें इतनी खतरनाक होती हैं कि पता लगता है कि अब तो मौत आ गई, अब तो कहानी खत्म। पहले ही हिरण हार जाता है, लेकिन हिरण हारता नहीं है, हिरण भागता है, जितना भाग सकता है भागता है वो। तो इट इज ऑल रिफ्लेक्टिंग इन द आईज। इफ समबडी कम्स अक्रॉस टू यू एंड यू आर अलोन, उसने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन आपकी आंखें इतनी ज्यादा डर जाती हैं कि उसको लग जाता है कि अरे ये तो कमजोर है, इसको तो मैं जीत लूंगा, इसको तो मैं पकड़ लूंगा। लेकिन उसी क्षण आपके अंदर इतना गुस्सा, जुनून, आपकी शक्ति हो जाए जो कि आपकी आंखों से नजर आती हो, सामने वाले में हिम्मत नहीं होगी कि आप तक वो पहुंच सके। छूना तो दूर की बात है, वो आपकी आंखों को देख करके भी डर जाए। तो योर आईज आर एक्सप्रेशन। आप इमोशनल होते हो, आपकी आंखों के आंसू बता देते हैं कि आप इमोशनल हो गए हो। उसी तरीके से जब आप जोश में होते हो तो आपकी आईब्रोज, आपकी आईज, दे रिफ्लेक्ट दैट हाउ स्ट्रांग यू आर, how confident you are. That's the first sign that goes outside. So you need to teach your kids that you have to be strong irrespective whatever situation you are. Never ever give up. You have to fight and handle the situations. फाइट मतलब कि एक्चुअली में लड़ जाना नहीं, लेकिन कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे कि कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल गर्दन पे आ गई है, खड़े रहना, डट करके, भागना नहीं। तो अगर औरत शक्तिशाली है, मजबूत है और सारी चीजें हैंडल करती हैं, तो इमोशनल होकर के भाग कैसे सकती है? वो तो सामना करेगी। So there are a lot of things which you have learned from the society, your environment, your families. Now it's a time to feed your kids with the same energies. I'm sorry, मैंने कुछ ज़्यादा लंबा कर दिया उसको बात करते करते. So now, yeah. No, that's Yes, please. Who else? That's Yeah, absolutely Mansi. fine, Abhinav. And I think, Mansi, in addition to what Yeah. you said, I guess uh, we should never try to, like people say that change only happens when you change yourself, and then, dheere, 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 the change happens. So if we try and, directly start fighting with jo hai, we need to, I think, first love ourselves and then try and modify ourselves, and then एक every person probably जिसको हम motivate कर सकते हैं उसको आगे बढ़ते बढ़ते, and then probably the change will happen, and it will take its its own time. We can't really decide onto it. So what you're doing here, by giving us this opportunity to listen to you, and you motivating us as well, it's one kind of a change which probably all of us take the input from, and then further motivate others to follow the same. Thank you, Mansi. क्या हो गया? सवाल खत्म? होता है होस्ट साहिबा ने सबको म्यूट कर दिया तो सबके आवाज बंद हो गई है। Priyank, you're saying something. आवाज नहीं आ रही। Monica, yes. I can't hear anything. Monica, we can't hear you. Hello, can you hear me? Haan. Now it's clear. Clear? Is it clear? Yeah. Yes, Priyank, yeah. Okay. जी. Yeah, I have two important questions which I want to
क्या हो गया, आवाज गई फिर से? Got disconnected. मतलब चिट्ठी मेरी पत्नी मेरी वाली बात हर तरफ से मैंने जो क्या बोल सकती Hello. जी Yeah. There are two questions which I would like you to answer. या My first question is, what is the answer to the query that we, in motivating and trying to manage so many things to prove ourselves, the time which we waste? How should a woman compensate that time? Because the Time time in lost what? never comes back. No, I didn't understand. I- Time in what? See, we had been saying a woman should be motivated, she should have a dream and all that. I don't agree to the fact that nowadays women don't have any dreams. Yeah, even the girls who are studying and are future women don't have any dreams to shine and prove themselves, right? But at the same time, there is a priority which exists where women sideline her dreams. And it is not that she is doing with force or with something, but situations demand such that she has to do it. Because many a times priorities of that sort, you can't you can't give priority to your dreams, right? It doesn't mean that you don't have dreams. But at the same time, Yeah. in fulfilling all those responsibility, all those priorities which you think is a priority, because if a woman is not taking care of a family go haywire. That is a proven fact. If we live Yeah. in India or we live abroad, but the time that is lost, that motivation, that energy, everything is lost. So, what is your Why it answer is to that? lost? Of course, it is lost. I'm Because see, asking why it is lost. How? why it is lost? See, if you can be a manager at the age of 25, suppose, for example, but your house demands that you are not ready to take next promotion for the reason because you know you won't be able to do 100% or do honest, you be honest to your profession, then you don't try to take up that next promotion. You forbid, you let it go. But and in say suppose after 5 years, now you're free to go in for the next promotion. What about that time lag? Of course, you have satisfaction that you have taken care of a family, your children are settled, everything. But that question mark always remains somewhere in your soul. Yes, that 5 years, I could have been the CEO if I had taken up that promotion at that time. How to compensate that? How should women, in a way satisfy that question? I got it. Yeah, I got it. Before I answer this, see, this answer is not only related to a woman. This answer will have a lot of other spiritual things as well to add to it. First thing is, do you follow any God, religion, anything? Yeah, I do follow. Yeah. Okay, you do must be doing your puja and your prayers and Yeah. whatever you do. Yeah. नहीं करते हैं? Yeah, I do. I do. Okay. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा कोरिलेट करेगा. I don't know about you. I'll just tell you a basic thing. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जिसको भी मानते हैं और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, अगर किसी दिन आपका छूट जाता है वो पूजा पाठ करना बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आपको क्या फील होता है कि आज मैंने पूजा नहीं करी, क्या करूं, कुछ अजीब सा लग रहा है, छूट गया है, 3-4 दिन आपका छूट गया पूजा करना, आपको लगता है कुछ मिस हो गया? हाँ, of course. Because it's your daily activity. It's your daily activity. Yeah, absolutely. तो आप क्या फील आता है, वो क्या इमोशन आता होगा कि जब वो छूट गया मेरा 3 दिन का, तो anything that hurts you? No, see, the thing is, see, when you are in a habit of doing something in a routine and you don't do it on a particular day, suppose I have a work and I have to rush early morning. Of course, I miss that prayer. But at the same time, I do feel that yes, today this work was more important. It's okay. If God is, see, God, I feel God is not the one who says you sit before me and do the puja. For me, God is present everywhere. If you have said spend 2 minutes, यही सुना पाठ करी तो वो आपने अपनी श्रद्धा के लिए करी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसमें थी वो थी आपका विश्वास कि आप उससे कनेक्टेड हो. पूजा पाठ सिर्फ एक जरिया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपका उसके साथ विश्वास कि आपने उसकी पूजा पाठ के अलावा
वो काम किया जो कि आपकी ज़िंदगी में पहले रिस्पॉन्सिबल था और आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं उसको पूरा करने की। आपने उसको अगर याद भी कर लिया तो आपका पूजा पाठ हो गई। यू देयर प्रियंका जी? जी, तो उसी तरीके से अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा टर्न और करिए एक डायरेक्शन में कि लाइफ में चाहे आपने ब्रेक लिया हो, चाहे आप किसी और डायरेक्शन में मूव कर गए हो या किसी और सिचुएशन में हो और आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका विश्वास आपके डिवाइन में। आई से डिवाइन बिकॉज इट कैन बी एनीबडी एज पर द रिलीजन्स। सो अगर आपने उसमें विश्वास रखा है, so everything is happening as per his plan for you. Nothing is before time, nothing is after time. आप जो कहते हो या हम जो कहते हैं ना कि अगर मैं उस डायरेक्शन में चला जाता तो हो सकता है कि मैं जल्दी पहुंच जाता, और इस डायरेक्शन में चला गया तो ये देर से पहुंचा रही है। हाउ कैन वी अज्यूम कि उस रास्ते पे जो हम सोच रहे हैं वहां पे कोई और स्पीड ब्रेकर्स या बैरियर्स या गड्ढा या कुछ भी था या नहीं था? हम सिर्फ इस रास्ते की बात कर रहे हैं। द गॉड हैज डाइवर्टेड योर पाथ from what you were going in to a different direction. There has to be a reason. Do not think कि मैं अगर पॉज में चली गई हूँ तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कैसे उसकी भरपाई होनी। उस टाइम में डेफिनेटली आपको ऊपर वाले ने कुछ और ऐसा सिखाया होगा जो कि आपके लिए सीखना ज़्यादा ज़रूरी था, for your more responsibilities and opportunities to come for the future. Nothing goes as इत्तेफाक, nothing is coincidence कि आपको अलग से बिठा दिया गया। और ये शायद वही इंसान, जैसे आप भी समझ सकते हो कि अगर आप अपनी लाइफ को कोरिलेट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज व्हाई द गॉड हैज मेड मी सिट ओवर देयर। सो आई विल ओनली से दैट नथिंग हैपेंस फॉर अ कोइंसिडेंस। इफ ही हैज पुट यू इन सम डिफरेंट रोल, हैज टू बी अ रीजन। ये तो उसी के हाथ की कमांड है, इसमें तो ना आप ना मैं कुछ भी कर सकते हैं। हम तो सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। अगर डाउट करेंगे तो जो हमारे हाथ में है वो भी निकल जाएगा। जब तक हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे वो हमें देता रहेगा। जी प्लीज। नहीं डाउट तो बताइए। नो वन, हाँ सॉरी, नो वन डाउट ऑलमाइटी। इफ यू बिलीव नोबडी डाउट्स ऑलमाइटी, आई विल नॉट से दैट, I will not say that. Then there are many factors which originate from this time gap. How would you enlighten those factors to for a woman to overcome for those time gaps? I hope you got my point. What I The want most to important thing is faith. फेथ के बिना तो कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। जब तक आप इस बात में फेथ करते हैं कि जो हो रहा है आपके लिए बेस्ट है एंड द बेस्ट विल कम इन योर फ्यूचर एवरी डे, यू विल स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ। मैं भी बहुत तेज स्पीड पे चल रहा था। when I experience that, faith and your determination is the one thing which can never let you down in any ways. Faith That I in the plan of the God. Faith in the plan of the God. That's to be specific. And I feel honesty is the best thing which one, if one does anything with honesty, Yeah. no one can overpower that. That I 100% have full, full faith, you can say, in that ideology. If you're doing your task with honesty and with full dedication, definitely you're going to get results. प्रियांक जी, एक सिंपल सा लाइन है, शायद मूवीज में भी सुना होगा कि जो आपका है, अगर वो आपका है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। रोक नहीं सकता, हाँ, और वो आई जो है। आपका नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं मिलने वाला। तो आपके लिए अगर लिखा है कि सीईओ बननी हो तो 25 साल की एज में बन जाओगी, और नहीं बनना लिखी है तो 55 तक भी चले जाओ तो नहीं मिलने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो स्ट्रेंथ देगा वो देगा विश्वास, कि अगर मुझे सीईओ बनाना है तो मैं मेहनत करूंगी। अब वो चाहे 25 पे दे चाहे 55 पे दे, वो अपने आप आपको बिना मांगे दे देगा। लेकिन अगर उसके पीछे ये कहीं पे भी आएगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो तो आपकी शक्ति को और कमजोर कर देगा। This is the line which actually I That's it. wanted to help from this. Okay, thank you. Thanks for the nice feedback. थैंक यू। और आपका दूसरा सवाल था, आपका कुछ दो सवाल थे आपके? I got interconnect कर दिया Okay. इसको। Okay. इंटरकनेक्टेड। वेरी गुड जी, Interconnected. वेरी गुड जी। और कोई? काफी लोग हैं भाई, कहाँ हैं बाकी लोग? या बाकी सबके सवाल भी हमने इसी में आंसर कर दिया? अमिता जी, काफी जनता है आपके साथ, 20 पीपल आर देयर इंक्लूडिंग मी। आई डोंट थिंक कि बाकी लोग मुझे जानते हैं, बिकॉज नाम तो शायद मैंने नहीं सुने हैं।
जी नहीं, बाकी many जनता में से many people जी, और किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, if they really have, मतलब I think we will have more sessions with Abhinav. हम अभिनव का काफी समय लेंगे और भी, because I hope everyone is enjoying and सबने फिर से जितने participants थे उससे ज्यादा ही फिर से आए हैं, तो of course I am understanding and I am feeling that everyone is really liking the session. So बिफोर in आई थिंक case अगर if किसी one और has any other questions, please you can talk to Abhinav directly. And I would request everyone to matlab they can put on their videos. okay, so maybe till the time others come up and they say something. I don't know हमारे पास time कहाँ पे आता है लिखा हुआ कितना बचा हुआ है. So I can We still have 5 minutes to go, Abhinav. I guess 5 it's minutes to go. Okay. we have Okay. 5 minutes more because it's almost Okay. we started at 2 and we will end it at 3. Okay. So if Perfect. anyone has any questions, they can come up with their questions in next 5 minutes. And till that time, Abhinav, you can carry on. I was just saying that for women empowerment, I have started a dedicated campaign called as Agni. And Agni campaign is basically into two parts. The first part is Agni 181, which is being those women who are being suffering in their lives. And suffering as in कि वो जिनके अंदर एक चिंगारी है कि मुझे कुछ बेहतर करना है अपनी जिंदगी में. So I am coaching them to bring that chingari into Agni form, and I'm coaching them in their lives. And then once they qualify on their performance, on their tasks, on their efforts, they are added to the group Agni 181. The second part of the group is called as Agni Rakshak, which is the Agni support team, which is a team of women who are into different fields like some are teachers, principals, some are into human resource, some are from the law, some are from the medical field, different segments. जहाँ पे कि लोग women की किस तरीके से help कर सकते हैं. Maybe we discuss cases, we discuss about making the women independent by her skills. A lot of things happen. So this is what way it is happening, and I'm great that I connected to Amita and she made this webinar happen and we are interacting today. And अगर मैं सोचूं कि आप लोगों से individually connect हो पाता तो I don't know कि मुझे connections कहाँ मिलते. But since you all were connected to Amita and we are here, so we are talking. तो ये भी एक जरिया है. जैसे कि मैं एक मीडियम हूँ एनर्जी शेयर करने का, वैसे ही Amita is here to connect me to all of you. So we all become the mediums of Thank you. energies. हमने जो Thank you भी so much. Thank you so much. या हमने जो भी सीखा या हमने जो भी कनेक्ट किया, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको आगे लेकर जाएं. क्योंकि कुछ टाइम के बाद मुझे भी पहले लगता था कि जो मैंने सीखा है मैं तो नहीं शेयर करूंगा, इट इज़ ओनली अबाउट मी, इट इज़ ओनली मी हु इज़ मैनेजिंग इट. बट देन आई रियलाइज कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, I have a specific life. Today I am here, today, tomorrow I don't know. So it is important for me that whatever I am getting from the divine, I have to give to others, and others have to share with more further others. The chain has to build up. Nobody is going to be permanent, but the chain will be permanent. एक सोच जो आज हमने बिल्डअप करी है, वो सोच बढ़ने में शायद समय लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा. जैसे कि होता है ना कि हम एक घड़े में पत्थर डालते हैं, पानी ऊपर आता है, एक पत्थर डालेंगे लगेगा नहीं तो नहीं हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है. लेकिन अगर सब मिलकर के एक पत्थर डालेंगे तो डेफिनेटली द वाटर विल कम अप एंड वी विल एबल टू यूटिलाइज इट. तो द सोच हैज टू चेंज, लाइक वी डिस्कस्ड, द थॉट प्रोसेस हैज टू चेंज फॉर ऑल, फॉर अस, आवर फैमिलीज, द सराउंडिंग्स, एंड डेफिनेटली द सोसाइटी दैट मेक्स अ चेंज. So that's what I want to say. Great to Correct. connect with all of you. Thank you, Amita. Yeah, please. Thank you so much, Abhinav, for such a wonderful. I would say yes, it's an enlightening session, and the thoughts which you have shared. Yes, मैंने जैसे अभिनव ने भी कहा कि in the afternoon I had called him and I had asked कि अभिनव what points क्या आप discuss करेंगे इसमें, और do you want me to ask some certain questions? तो he said कि no, nothing, Amita. I
do not have much to say. Whatever it will be, people, I want people and ladies to speak and them to ask questions. So it will go in flow. So I think Abhinav also enjoyed the people here, and we would really request Abhinav to come up for one more session according to your availability, and we'll get connected again. क्योंकि धीरे धीरे ही I टॉपिक क्या guess वो सुनना चाहेंगे आप platform लोग? टॉपिक की वोटिंग होनी चाहिए कि क्या? Absolutely. All everyone can unmute yourself and then speak up. I think unmute करके तो शायद सारे लोग नहीं बता पाएंगे. Maybe you can do one thing if you have a group of we your can write people it down. together. Yeah. We'll do that. We'll do that. Maybe आप लोग voting कर सकते हैं या एक WhatsApp में question पूछ सकते हैं कि what is a topic, common topic for all, and maybe basis the popularity you can choose like what is the topic. I'm sure common topic सभी के होंगे. So that's it. Great everyone. Thank you so much. मुझे सुनने के लिए, बात करने के लिए, और it's Thank great to you, connect with all of you. Thank you. जी. Thank you. Thank you so much. Thank you so Okay, much. Take care. Yeah, bye-bye. Thank you. Thank you. Thanks, ladies. We'll connect later on the group. Okay. Okay.